Hello everyone, hope you all are doing well and welcome to another pack preview for Rario. This is for the India South Africa series, and the first half of this video we'll try to cover and speak more in terms of the new users, what is in it for them, and then as the video goes on we'll move towards the strategy and how old users also should approach this specific game, as many of you already have cards loaded. So what is the best possible way to use them and all of that. And we have Nikhil Bhai with us today. बिल्कुल थैंक यू एज ऑलवेज फॉर हैविंग मी यस रैरियो बैकड्रॉप बड़े बड़े गेम्स बड़ा रिवॉर्ड पूल गारंटीड रिवॉर्ड्स नथिंग बीट्स Hmm. Yes, absolutely. So let's look at the reward pool first, them. and then we look at what are the packs that are in store for you. बिल्कुल So, like you can see, India versus Souथ Africa. Now this is the bronze contest. Bronze contest. The first prize here is $12,500, which is 10 lakh rupees, and then as you go down 6,000, which is again 5 lakh rupees. But how do you join this contest? Here it says, like you can see here, I have joined these contests already. You can join them too. How do you do that? There's an app. There's a link in the description, a website link of Rario, which when you use, you'll get a certain sign up bonus of $20. Now these packs are, I'll show you the pricing of these packs for you to get context of how you can buy them, what is the pricing of them, all of those parts to cover. So yes, like you can see my screen here, these two packs are already live for $4 and $11. Now, like I mentioned, when you get the $20, which I'm talking about in the description, you will be able to buy these packs at 50% price. So if this is for $4, you will be able to buy it for $2 because we are the rest of the $2 is on us. So you get a 50% discount, and you need three cards to start the game. So to enter that specific contest, at 10 lakh rupees first prize contest, you need three cards to start. So if you buy two packs, you get four cards, and once you have four cards, you can start playing the game. So I'll show you how I've set up the team here. So you have to click here to join. Here my one team is entered. So you basically just lay out all the cards that you got, one, two, three, and the fourth one can be spare. You can sell it off, whatever you want to do. But what is the best part here? You can use these game after game. So I didn't buy these cards today. I already bought these cards before. Now I'm able to actually play for free because I don't have to buy the cards again. So एक बार ले लिया उसके बाद it's done. बिल्कुल और जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है विथ रेडियो द एडवांटेजेस इफ यू पार्टिसिपेट एंड यू आर नॉट रैंकिंग वेल यू डोंट लूज एक्सेस टू दिस कार्ड दीज आर विथ यू फॉर लाइफ टाइम आप इन्हें Hmm. और किसी सीरीज और किसी टूर्नामेंट सभी जगह पे यूज कर सकते हो तो वो एडवांटेज आपके साथ रहता है और जैसे हमने कहा एंट्री देखो कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और रिवॉर्ड्स कहाँ Hmm. तक है तो दैट The इज अ क्लियर entry is आइडिया only फॉर यू these many, 1200 teams, and you can see rewards up till 65796 rank. उतना तो भरेगा भी नहीं. बिल्कुल तो कुछ नहीं तो आपको रेडियो बोनस तो मिल ही रहा है तो Hmm. विन विन सिचुएशन है वैसे ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको वैसे भी बोनस से आधा पैसा चला जाएगा यू हैव टू प्ले हाफ फॉर द पैक एंड इफ यू कीप प्लेइंग रेगुलरली Hmm. बी स्मार्ट पिक द राइट गेम्स मेक द राइट स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ कौन से प्लेयर को कब बैक करना है तो उसके साथ यू विल बी एबल टू गेट समथिंग बैक ग्रेजुअली एंड यस जिस Hmm. दिन तीनों प्लेयर चले गए फर्स्ट प्राइज आपका and people have won Yes. that So and not yep. being yeah people have already won that enough from the people who have already registered so you should definitely try it out. Right. In fact, I have a question on GL winners and if we actually know any. So, yes, we actually know Yep. quite a few GL winners. If you just go to my Twitter timeline or Nikhil Bhai's Yes. Twitter timeline, you'll see there are many people who signed up via link plate from the Yeah. CPL, not only the World Cup. And Yeah. they've already won prizes, and those cards are still with them. So, the cards they use in Yep. CPL, they can use in the World Cup, they can use Yes. it for the series. So, it's not like the card has any expiry date. The card you can keep using. बिल्कुल बस यही है कि आप इसमें घुसेंगे तो आप ये सोच के ना घुसे कि आपको इमीडिएट गेम रिवॉर्ड है दिस इज Hmm. मोर लॉन्ग टर्म बट यहाँ पे रिवॉर्ड्स ओवर लॉन्ग टर्म ज्यादा रिवॉर्ड है इमीडिएट आपको बोलोगे यार मेरा पिक नहीं चला बट आपका कार्ड कहीं नहीं गया यू कैन कीप यूजिंग द कार्ड जिस दिन आपका वो प्लेयर चले आपका इन्वेस्टमेंट पे 10x रिटर्न वापस आ जाएगा अब विड्रॉल भी अवेलेबल है उसका प्रोसेस की वीडियो भी ऑलरेडी अप है चैनल पे वो भी आप देख Hmm. लो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दैट तो दैट विल आल्सो सॉल्व योर पर्पस इन दैट सेंस
Right, and someone asking the money required to start on the app. So practically, the money that you need, example, if you're starting from India, South Africa, you need, because you're going to sign up from the link in the description, you'll get $20. You need minimum two bronze packs to start. So you will practically need $4 to buy those two packs, because baki ka $4 is arranged from us. So you need 320 rupees to start playing the game. बिल्कुल। और जैसे हमने कहा ये 320 रुपीज़ आप 650 रुपया खर्चा कर रहे हो, ये कार्ड आपके साथ जिंदगी भर जब तक रैरियो है ये कार्ड आपके पास रहता है, हारो जीतो कुछ भी हो। इसके और Hmm. यूटिलिटीज भी आगे आएंगे, वो बेनिफिट्स तो दूर, ये जैसे हमने बात करी, द पॉइंट इज टू हाईलाइट द प्राइस पूल कि भाई आप एंट्रीज देखो कितने लोग टीम बना के एंटर कर रहे हैं और Hmm. प्राइसेस कहाँ तक। सो दैट इज द रीजन वाई वी आर पुशिंग कि भाई आपको ऑलमोस्ट अगर टीम्स नहीं बढ़ती तो गारंटीड रिटर्न जैसा है कि कुछ भी हो आपको कुछ तो वापस मिल जाएगा। तो इन Hmm. दैट सेंस आप, हमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा जय माता दी हो जाए इसमें सब गरबा लगाने, नहीं, रुको, धीरे धीरे जाओ, समझो क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, एंड देन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली वंस यू आर मोर कंफर्टेबल विद हाउ द थिंग्स वर्क। Hmm. क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्लेस भी है जहाँ पे इट इज प्रॉपर प्रैक्टिकल कॉमन मेंटेलिटी। प्लेयर चला, भाव बढ़ाया, बेच दिया। प्लेयर नहीं चल रहा है, भाव कम हुआ, खरीद लो अगर आपको लगता है कि ये आज नहीं पर कल चलेगा। समरी लगा तबरे शमशी, उनको इतने गेम्स नहीं मिले, बट मैंने भी पिछले गेम में उन्हें कैप्टन बना के रखा था Hmm. इन माय रैरियो 3 टीम, क्योंकि मुझे पता था ज्यादा लोग नहीं लेके आएंगे और शमशी अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे Hmm. स्ट्रैटेजी भी है आपकी, इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे गेम सोचते हो, क्या आपको लगता है गेम में होगा, वो भी यूज करें एंड यूज दिस प्लेयर्स स्मार्टली। के अगर आपको कोई ऐसा प्लेयर मिले जो आपको लगता है यार ये क्या काम कर, पर भाई अगर एक आपको वसीदा फर्नांडो या अविश का फर्नांडो ऐसा कोई प्लेयर मिल जाए, ये आखिरी सीरीज तो है नहीं, इसके बाद भी मैचेस आएंगे, वहां पे वो कवर होगा। और ऐसे प्लेयर पे आपका गट फील इंपॉर्टेंट है। अगर Hmm. महेश पतिराना आपको मिल जाता है आज, वो बंदा अगर फिट रहता है 5-6 साल तक क्रिकेट में श्रीलंका को विकेट ला, वो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा अगर आपका उतना उस पर गट फील और भरोसा है तो। विच इज लाइक कीप Hmm. सेइंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। Think smartly and invest according to your budget, and don't go too high, too low. Try things out, and then you'll see the benefits in the long term. Yes, start with the starter or the debut packs and then find Yes. your way through. And for those who are the old users, like I mentioned, there are a few things we want to say. One is the reservation is open for these two packs. So you can see I've Yeah. already reserved them. So you can reserve them right now because you might already have a lot of silver and bronze cards. So how do you use that to your advantage? I'll come back to that too. But we just want to discuss the player lists before we get to that part of it, the strategy part of it. So you can see here in the black tier, we have like all the top cards. And I was just doing some research before we started this video on what is the pricing of most of these cards. So this $250 pack has one black and one gold card. Now, if you see Arshdeep's market value, it's above 200. If you see Akshar's market value, it's about 180, 190. If you see Bhuvneshwar's market value, above 200. Miller above 200. Rasso after today is now surely above 200, and Decock is above 300, and Gidi is about 190. And the price of your pack is 250. Now, in the worst case scenario where after 6, 7, or 8 games you feel like you don't like the game and you don't want to play it, you have the option to sell the card back at that price. And remember, when you join these contests, like you saw, कुछ guaranteed rewards भी है. You anyway will get some reward just for joining the contest, Yeah. irrespective of whether your combination works or not. And yet, these prices, the cards are highly priced in the market. So you should be able to use that to your advantage, even if you're buying a higher price pack. And someone asked me in the comments if how true or how legible what I'm saying actually is. So I actually did this a few days ago. I sold Mitchell Marsh for 255 USD when I bought that pack for 250, a $250 pack which had Mitchell Marsh and which had Mitchell Stark. And I wanted Mitchell Stark, so I kept him. And practically now my Mitchell Stark card is free because I bought the pack for 250 and I've sold one player for 255. So practically Stark has given me $5 for staying in my team. And Pat Cummins $208, and my second card with Pat Cummins was David Warner. So, and I've already also got rewards by joining these Yeah. specific cards in contests. So there's really nothing else that you can ask for in terms of how to gain returns back. And now that I've spoken too much, Nikhil bhai will take you through the gold tier.
बिल्कुल। और देखिए जैसा हमने पहले आपको रिवॉर्ड पूल बताया था, आप वहाँ पे जाके एक बार वापस देख सकते हो, देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट। तो आपको वैसे टाइप के कार्ड्स आपको जब आप पैक परचेस कर रहे हो उसमें आपको दिख जाएगा। तो यू कैन यूज दोस पैक्स एंड कार्ड्स आल्सो वेरी स्मार्टली इन टर्म्स ऑफ, आप गोल्ड में देखें तो अगर आप मैच वर्थ में हैं, तो आपको स्पिनर के बदले यू वुड वांट टू टेक पेसर्स मोर। तो यू कैन यूज योर कार्ड्स एंड कॉन्टेस्ट वेरी स्मार्टली दैट ओके, अगर आपने ब्रॉन्ज में इन दोनों प्लेयर का कॉम्बिनेशन ट्राई करा है, तो हम्म दूसरे कॉन्टेस्ट में दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करो एज पर द वेन्यू, एज पर द ओपोजिशन एंड वॉट एवर दैट इज। तो वेरिएशन भी आपको मिलेगा नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेस्ट, अब वहां पर भी उसका भी रिवॉर्ड पूल आप देख लें। हर कार्ड का अलग अलग एक, हर कॉन्टेस्ट का अलग रिवॉर्ड पूल है एंड इट इज एज हम्म रिवॉर्डिंग एज द ब्रॉन्ज वन। क्योंकि फिल अगर नहीं हो रहा है, आपको गारंटेड रिटर्न्स है, तो इट मेक्स योर इन्वेस्टमेंट वर्थ द रिटर्न। तो जैसे मैंने कहा, जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन्हें पता है हाउ द सिस्टम वर्क्स, पर अगर आप नए हैं तो इन सब के साथ जाइए। ये भी देखिए कि यार अगर आपके पास अक्षर पटेल और लुंगी नगरी आती है आ रहे हैं, तो आप सोच हम्म लो कि क्या ये वेस्ट हो गए? नहीं, वो वेस्ट नहीं हुए। आपको उन्हें स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक गेम में यूज करना पड़ेगा। और क्या पता उस दिन जिस दिन आपने यूज किया आपका काम हो गया। तो हम्म फर्स्ट प्राइजेस आर अबाउट 400-500 डॉलर्स। तो अगर आप 10-15 डॉलर भी इन्वेस्ट कर रहे हो अभी, और अगर आपको 15 कितना ज्यादा टाइम रिटर्न है वो देखो कि अगर आप 400-500 किसी एक बार बना पाते हो तो। और नहीं हम्म भी बना पा रहे हो तो भी जैसे हमने पहले कहा, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स रेगुलरली आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर निकल गया, आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, ऑब्जर्व द पैटर्न, सी हाउ मार्केट प्लेस पीपल आर अर्निंग फ्रॉम मार्केट प्लेस ऑल्सो। कि यार हम्म आज रिलीज उसको अच्छा चल गया, पब्लिक को चाहिएगा उसे, तो मैं प्राइस बढ़ा के बेच देता हूँ। इट इज एज नॉर्मल मार्केट टेंडेंसी एज यू सी इन योर अदरवाइज मार्केट एज वेल, के प्राइस सप्लाई डिमांड ये सब चीज वैसी काम कर रही है। एंड यस, मेजोरिटी कार्ड्स आपको ब्रॉन्ज के मिलेंगे क्योंकि सबसे बड़ा पूल ब्रॉन्ज का ही है। हम्म Yes, bilkul. And another key point that we wanted to cover before we close the video is in terms of how to use these cards for XP. So many of you asked us at the start, ki what is the benefit of joining early and how does it help you? So if you see here now, whenever these packs are bought fresh, they come out as 0 XP cards. There's no XP on the cards. But like you can see here now, all these cards have XP 16%, XP 10.5%, XP 19%. And what does this XP do? This XP increases the number of final points for your card. Yeah. So Quentin de Kock will score 50 runs for me and for you. But what will he do better for me is with this 19% XP, I will get a few points extra for him. Yes. So, like I say, even if the player does not perform in the game, he's already increasing his The value. value as an asset in the game for you. So, all these बिल्कुल high XP cards will only keep coming of use to you later. बिल्कुल। तो इसीलिए आप देखें, अगर आपने किसी प्लेयर को बहुत बैक कर रहा है तो उसे हर बार शायद छोड़ देना ही सही नहीं होगा, क्योंकि उस Hmm. कार्ड की एक्सपी बहुत अच्छी है। तो अगर आप वो कार्ड उस दिन यूज करो जिस दिन वो चलता है, पर क्योंकि आपने उसे पहले भी बैक करा, यू स्टैंड अ बेटर चांस टू विन एज कम्पेयर टू Hmm. समबडी हु इज बाइंग इट ऑन दैट वेरी डे एंड प्लेइंग। तो ये एडवांटेज भी है कि प्ले करो, And बैक करो anyone अपने would also प्लेयर्स want को। to buy these higher XP cards rather than buying the lower XP card in the market. So, बिल्कुल। तो that will वैल्यू also आपको work for you. मार्केट प्लेस में भी बढ़ी और कॉन्टेस्ट में भी बढ़ गई। तो Hmm. थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, अगर आप नए हैं तो सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा अलग लगेगा एज कम्पेयर टू फैंटेसी, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ योर टाइम इन्वेस्टमेंट। छोटा इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और देखें आपके लिए कैसा जाता है। आई थिंक इट इज़ रिवॉर्डिंग वंस यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू फाइंड द थ्रिल कि ओके, 3 प्लेयर ही हैं, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 11 कितनी टीम बनाओ, कुछ नहीं, एक टीम बनाओ, 3 प्लेयर, सिर्फ जय माता दी वैसे। Yes, Bilkul. Apart from that, if you have any questions, we are happy to Yeah. be here for a minute or two to take any other questions that you guys have. And $60 for Champions Pack. What if we get Dinesh Karthik or Maharaj as their value is currently not worth $50? So very fair question, but keep in mind, example, you get Dinesh Karthik. Dinesh Karthik will come to use to you in the IPL. He'll come to use to you whenever India plays. And it's not like his batting is never going to come. When his batting comes and he scores that innings on that day again, the market will treat him differently. And you'll also get points because most people will not pick him in their combination expecting him not to bat. So there will be specific use cases for each player. Yeah. Every player
is not going to be your perfect ideal player that you have to pick. And keep in mind that, like, I'm not being disrespectful here, but even they're running a business, so they cannot only sell the best cards, right? They have to sell every kind of card, because every player has a Yeah. certain role in a team. Not necessarily that that role will be played every day, but the day it's played, and if you have that player, you have played the game correctly. जैसे अगर आप रिसेंट T20 का एग्जांपल ले लें, ही केम अप द ऑर्डर, बैटेड एट 4, स्कोर्ड अ हैंडी 40 ऑर्डर। तो उस दिन Hmm. अगर आपने दिनेश कार्तिक को बैक करा, अगेन यही सोच के कि और प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, डीके खेल रहे हैं, बैटिंग ऊपर कर सकते हैं, तो आप उनके चांस ले सकते हो। केशव महाराज रेगुलरली 2-3 विकेट ले रहे हैं Hmm. इन मोस्ट ऑफ द गेम्स। अभी तो और दूसरे फॉर्मेट भी हैं जहाँ पे ही कैन बी पार्ट ऑफ। तो आई थिंक प्लेयर मिलेगा, कुछ प्लेयर को आपको इमीडिएट बोलेगा कि इससे इमीडिएट रिटर्न नहीं है, किसी के Hmm. साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न ज्यादा होगा, और किसी के साथ स्पेसिफिक रिटर्न ज्यादा होगा कि ओके डीके पहले बैटिंग करते समय छोटी बाउंड्री है, प्रमोट हो सकता है, यू कैन यूज Hmm. इट। तो वैसे आप कार्ड्स को यूज करें, और जैसे हमने पहले भी कहा है, these cards will have more utilities in the near future. So once the brand also puts that out for you in more detail, you'll get to know there are many more things lined up. So this game is, yes, a big part of it, but there are other things to follow as well. तो अभी के लिए मैं स्टिल बोलूंगा, हैव योर स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ अगर डीके मिलता है तो कैसे यूज करना है, महाराज मिल रहा है तो कैसे यूज करना है, सबका यूज केस होगा। यहाँ Hmm. पे स्ट्रेटजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट द प्लेयर्स। Right, and someone saying they got Babar Azam in $11 pack yesterday and got Riley Russo. Already sold Babar for 20 and sold Riley for another 20. And didn't want to point out, but this is the same person who was criticizing me for talking about Rario last week. So I'm glad to see that's Vinny. a that's okay. See, that is the thing. My point is, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, Really don't till try. the time you'll not be the part of the system, you'll not get exactly how it works. It may Hmm. look or sound very stupid or weird, but आप एक बार इस सिस्टम का हिस्सा बन के देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रहो ही या जाओ, ट्राई Hmm. फॉर योरसेल्फ, गिव इट टाइम। दीज थिंग्स, जब फैंटेसी नहीं आई थी, एवरीबडी टुक अ लॉट ऑफ टाइम, पीपल आर स्टिल टेकिंग टाइम, बट Hmm. नाउ यू नो, तो यू फील कि यार शुरू में अगर ज्वाइन कर लिया होता तो दिस इज द पीरियड दैट इज फॉर एरियो, के दिस इज द पीरियड दैट इज स्टार्टिंग टू ग्रो मोर, गेटिंग मोर अटेंशन। तो अगर आपको सूट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम Yes, absolutely. And congrats again, Vinith. नहीं। या Uh, I've already invested sign up. How will I get? So many of you have this question. Anyone who has not got this bonus yet, you can tag Rario or Shubham on Twitter, or both of them preferably, and just DM them your registered email ID and mobile number, and they'll try to help out and figure what went wrong there. बिल्कुल बिल्कुल। Can you suggest players for tomorrow's match, please? Now, how will I win, yeah, if I suggest all the players here? नहीं But भी anyway, you saw my आई combination already. हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा था कि हमने देख लिया वैसे भी उनका क्या कॉम्बिनेशन था। ही है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्थ में Hmm. विकेट है, सिडनी में खेल रहे हैं, मेलबर्न में खेल रहे हैं, डिफरेंट कंडीशंस डिमांड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स एज कैप्टन एज डिफरेंशियल एज वेल। अगर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम वीक टीम को खेल रही है, पर अगर वीक टीम का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, मे बी यू वांट टू मेक हिम द कैप्टन एंड नॉट द अदर टू, बिकॉज उनका रिटर्न आपको पता नहीं, बट इफ दे हैव टू डू वेल, दिस गाय हैज टू परफॉर्म। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, यहाँ पे वो आपको फ्रीडम है कि आपको ऐसा ये सेट नहीं करना कि भाई ये 2 3 4 5 नहीं, 3 प्लेयर, Hmm. बैक द बेस्ट कॉम्बिनेशन। कल के लिए मैं कहूँगा पर्थ है तो फास्ट बॉलिंग में नहीं हुआ, रन इतने नहीं बने, तो मेरा तो पहला हुआ तब से बायस है कि भाई ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को लो, और बैटर भी ऐसा लो जो आपको कैचिंग से कंट्रीब्यूट करे। बहुत ज्यादा हिंट्स दे रहा हूँ, बट ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, absolutely. And we have no more questions. Cool. We are sorted. ओके ग्रेट। So thank you so much to everyone who tuned in. We hope यप we were helpful with whatever information we could give. If you still have any questions, you can drop यप them to us on Twitter. Thank you so much to everyone who tuned in. Have a good night. Yes, please take good care. Read all the documents carefully before investing. See you soon.